प्रोग्राम को मुकम्मल लेके चलने के लिए हेड गर्ल एमन फातिमा और हेड बॉय अली नकी। And I, Aman Fatima, the head girl of Chenab College, Jhang, welcome you all in the inter-house speech competition among seniors for the year 2022. Today is a big day to think how far flung we have come and how far we have to go, along with multifarious struggles and triumphs. There is much more to thrive and much more to show. Let's rejoice the majestic journey. Elated as I am to introduce myself as a part of this esteemed institute, where we are not only taught within four walls, but also beyond. Chenab College, Jhang not only comprises of beautiful architecture and green grounds, but also enriches the history of nourishing fertile minds and igniting the candles of talent in students. Chenab College, Jhang is one of the top-notch institutes of Pakistan. It's been a foundation of illuminating ideas, which year after year produces a galaxy of shining stars and speakers of passionate voice, intertwined with dynamic message that leaves an audience enthralled. This prestigious institution has been providing platform to the students to groom and nurture their skills and has been bringing out their hidden aptitude from the past 25 years. And when it comes to language, ethics and morality, this college is an idol of knowledge and experience. It has been teaching us lessons of life which will never be effaced and has been shaping characters of the students for the world to face. Chenab College, Jhang is a model of virtues standing high and tall as a mark of our undying and fruitful traditions and cultures. Chenab College, Jhang is working in and out for the betterment and glorious future of its students. Chenab College, Jhang is truly a place which holds the beautiful colors of the sky and the conquerors of the world. To start this competition, I would like to call Hasnain Hayat to recite some verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. Jazakallah. Now Sayyida Areed Zahra will come on the stage for Naat Rasool Maqbool sallallahu alaihi wa sallam. काश मैं दौर
रे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कद मों में सरकार के पाया जाता। रेत के ज़रों में अल्लाह बदल देता मुझे। रेत के ज़रों में अल्लाह बदल देता मुझे। फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश 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 में होता कोई ऐसी लकड़ी। काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कद मों में सरकार के पाया जाता। Subhanallah. Ladies and gentlemen, the inter-house speech competition is meant to water the fertile minds of the students. Debating isn't merely a trend, it is an art, and we are here to relish and learn from it, because debate is a power. It is to persuade, to convert, and to compel. Ladies and gentlemen,
The houses which are to glamorize this event are as follows: Fatima House, Heather House, Iqbal House, Jinnah House, Khatija House, Liaquat House, Maryam House, Nishtar House, Qasim House, Sir Sayyid House, Tipu House. Zainab House. Ladies and gentlemen, today we have with us, and I feel privileged to announce, the judges for English declamation among seniors. Now I would like to introduce you to the first judge of English declamation, Ma'am Umaira Tahir. She is the chief judge for this. She is our chief judge for this competition. Her hard work here at Chenab College Jhang, nourishing young minds, is something we cannot credit her enough for. And apart from being a successful teacher, she has been actively playing pivotal role in making Chenab College Jhang a top-notch institution. She is worth all the shining stars of the sky. So please welcome Ma'am Umaira Tahir. Now, I would like to welcome our second judge of English declamation, Ma'am Kaisra Ashraf. If one takes a closer look at the alchemy of achieving person, two distinct virtues pop up. These are pioneering spirits and willpower. I request Ma'am Kaisra Ashraf to be seated. Please give her a big round of applause. Now I would like to introduce you to the third declamation, Mr. Khwaja Abdul Waris, the man of distinct vision and a foundation of illuminating ideas, an idol of knowledge, experience and an inspiration for all of us. Welcome to Khwaja Abdul Waris. अब मैं आप सबको मुकाबला उर्दू तकारीर के मुनसफ़ीन कराम से मुतारिफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे आज के मुकाबला उर्दू तकारीर की मुनसफ़ आला मिस फरजाना जबी साहिबा हैं। आप कई अशरों से चनाब कॉलेज झंग में अपनी इम्तियाज़ी हैसियत को बरकरार और अपनी अलग शनाख्त को कायम रखे हुए हैं। आप चनाब कॉलेज झंग के नौनिहालों की तरबियत का फरीज़ा बखूबी सरअंजाम दे रही हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं मिस फरजाना जबी साहिबा। मिस, आपकी नज़र ये शेर करना चाहूँगी, तालीम को लिखेंगे अगर ताज महल हम, इस पैकरे तदरीस को मेहराब लिखेंगे। अब मैं दावत दूंगा हमारे आज के मुकाबला उर्दू तकारीर के दूसरे मुनसिफ मोहतरम जवाद इकबाल साहब को। आप उर्दू ज़बान व अदब पर पूरा अबूर रखते हैं। आप नहायत मेहनती, शफ़ीक और काबिल उस्ताद हैं। कई सालों से तलबा और तालिबात की तरबियत का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरम जवाद इकबाल साहब। सर, आपकी नज़र ये शेर करना चाहूँगी, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारे आज के मुकाबला उर्दू तकारीर की तीसरी और आखिरी मुनसिफ़ा मिस इरम रुबाब साहिबा हैं। आप तलबा की इखलाकी और जहनी तरबियत और उन्हें एक कामयाब इंसान बनाने के लिए हमेशा कोशां रहती हैं। आप अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दे रही हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं मिस इरम रुबाब साहिबा। मिस, आपकी नज़र ये शेर करना चाहूँगी, तामीर का एहसास जगा देते हैं अफराद, हर गाम पे मंजिल को सदा देते हैं अफराद। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस इरम रुबाब साहिबा। Now I would like to introduce you all with the topics of English declamation. Heads we win, tails you lose. Necessity knows no law. Give him a pip. Where the world is coming to, we all want white-collar job.
आज के मुकाबला उर्दू तकारीर के मौज़ूआत हैं। मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता, फिर एक नया आफताब मुंतज़िर तुम्हारा है। जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं, गर्दाब की हर तह में साहिल नज़र आता है। मेरे सारे ख्वाब ले लो, मुझे कुछ उधार दे दो। The rules and regulations for today's declamation are: 2 participants from each house will participate, one in English and the other in Urdu. The time duration for today's declamation is 4 to 5 minutes. The first bell will ring after 4 minutes and the second bell will ring after 5 minutes. A speaker making offensive remarks against any important personage or controversial religious or sectarian remarks shall be immediately disqualified. Using words or sentences with any indecent connotations and passing derogatory remarks is not allowed. Now I invite the first contestant of English declamation, Maira Maqsood. The topic of her speech is Where the World is Coming to. From the darkness of Palestine to the bloodshed in Kashmir, from the violence in Burma to the conflicts of Uyghur Muslims in China, where the world is coming to. Mr. President, when I sat down to write this speech, I opened the chapters of history and asked myself, is this the world we are living in? Is this the world that our ancestors predicted? Is this the humanity we are showing? Is this the care we have for each other? So I looked around. I looked around, ladies and gentlemen. I saw food, but the cries of hungry children haunted my dreams. I saw life, but the death rate caused by violence shook my soul. I saw families, but the kidnapping graph frightened me. I saw money, but the inflation rate saddened me. So I said that where the world is coming to. Mr. President, sadly, this world is in a state of terror. There is no generosity left in us. Gone are the days when the states were bound to the rules laid down by the United Nations and other international institutions. Kashmir is in darkness and has been converted into the largest human prison in the world since August 5th by the oppressive Indian government. Blatant violations of human rights are at their peak, and continual curfew is killing the people of Kashmir. The Burmese military has been conducting ethnic cleansing against the Muslims and the other minorities. The crises in Palestine are unbearable. Tears shatter from the eyes when the small kids see their parents being brutally murdered. Teenagers are shot dead and killed by the Israeli forces. The innocent children are stabbed by the poisoned daggers, and we find their mothers crying to swollen eyes. The persecution, harassment, violation, involuntary disappearances, use of force and detentions makes us say that where the world is coming to. Mr. President, nowadays people have set their beauty standards. People today just give respect to the money. They just fall for the money. This is the time when the global economy is hit by a recession, when people get laid off and fired from their jobs, when people give respect to the money more, when it is hard to even find a day with a digital detox, when instead of apologizing, people find the quotes which match their foolishness and post it on their social media stories, when economics spread gloom and give their analysis with every serious faces, when newspaper headlines are all negative, when global climatic change seems to be unstoppable. So I say that where the world is coming to. Mr. President, there is a need to make people remember that these great anger and violence can never build a nation. There is a need to make people remember
that these luxurious items in lavishing homes does not make you valuable, but your kind heart and soft tongue do so. Hazrat Ali said, this world is not a permanent place. It's a passage, a road on which you are passing. So let's not make humanity decline. Let's not make these worldly items prestigiable. And let's make this world a better place. I thank you all. This was a very insightful presentation by Maiza Maqsood from Fatima House. अब मैं दावत दूंगी फातिमा हाउस से आयशा इनाम राव को। आयशा इनाम राव जिनका मौजूए तकरीर है जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं। ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते, ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने, तुम्हारे ऊपर तुम जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते, ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते, क्योंकि सदरेज़ी वकार जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं। जनाबे वाला जब हमने अपने आप को बेहिसी, बेरुखी और बेदर्दी से एक ऐसा लावारिस मरीज बना दिया हो जिसकी एक मामूली सी बीमारी बदउनवानी को डॉक्टर, सर्जन, तबीब, हुक्मा और कंसल्टेंट मईशत के कैंसर का आखिरी मरहला बनाए बैठे हों, जबकि कुदरत और फितरत की हर आसाइश के ढेरों ढेर लगे हों, मगर बेज़मीरी और खुदगर्जी के फालिज का गलबा हो, तब ऐसे मरीज़ को ज़िंदा दरगोर हो जाना चाहिए, मगर ज़िंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं। सदर अली वकार पाकिस्तान दुनिया में घी पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क, कपास, आम और चावल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क, गन्ना, दूध और खजूर पैदा करने वाला पांचवा बड़ा मुल्क, गंदम, माल्टा और खुबानी पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क, मगर करप्ट तरीन सियासतदान, राशि अफसरान, बेज़मीर अवाम, नाअहल हुक्मरान और नीम मुर्दा इदारों के नीम बेहोश सरबराहान पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद अली वकार जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं। सदर अली वकार आज मेरे मुल्क के हुक्मरान सारी दुनिया में हाथों में कशकोल उठाए ये साबित करने पर तुले हैं कि सैलाब आया और ये एक आफत है, लिहाजा हमें आफत ज़्यादा करार देकर इमदाद दी जाए। लेकिन अली वकार ये आफत से ज़्यादा हमारी नाकाम मंसूबा बंदी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हम आफत ज़दा नहीं बल्कि आसेब ज़दा हैं, और इस आसेब के फर्जंद यानी आसेब ज़ादे मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए हैं। कोई आसेब ज़ादा डॉक्टर के रूप में मसीहाई के एवज हमें निगलता है, तो कोई आसेब ज़ादा तालीम के नाम पर जाली डिग्रियां बेचता है, कोई आसेब ज़ादा हर खाने की शय में मिलावट करता है, तो कोई हमको ही खाता है, कोई आसेब ज़ादा सियासत की कुर्सी पर बड़ा जमान है, तो कोई कानून और इंसाफ की धज्जियां बिखेरता है, मगर हम चुप हैं, खामोश हैं, तालीम याफ्ता होकर भी गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि हज़ारों डिग्रियां लेकर दस्तरस पाकर छलकते लफ्ज़ आंखों से न पढ़ पाओ तो जाहिल हो। फिर कहना पड़ता है अली वकार जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं। सदर अली वकार मुझे समझ नहीं आता कि आज से 75 साल पहले ऐसा क्या जादू किया गया था कि लोग अपने घर बार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी माओ, बहनों और बेटियों को इस्मत दरी के खौफ से खुद मलकुल मौत के हवाले करके अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने राज दुलारों को खून में नहलाकर यहाँ लेने क्या
क्या आए थे? लाकानूनियत, बेइंसाफी, मिलावट, अखलाकी गिरावट, शरंगेज़ी, दहशतगर्दी या जमहूरियत? आली वकार उन मरने वालों की औलाद को क्या हुआ? वो शोहदा जो मनोमट्टी तले दफन हुए, उनके जज्बात के लिए एहसासात को क्या हुआ? जिना, इकबाल, सर सैयद और फातिमा के दिए गए ख्यालात को क्या हुआ? जब जवाब नहीं मिलता तो कहना पड़ता है, एक ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है, रहज़नी, गारत, गरीब, बेदाद की तशहीर है। एक शब उजड़ा किसी बाबा की बेटी का सुहाग, उड़ गई फूलों की खुशबू, डस गए कलियों को नाग। आदमियत इन दिनों एक लाशाए तकदीर है, आज बेनामो निशां असलाफ की तौकीर है। एक ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है, क्योंकि जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं, जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं। शुक्रिया। वो पहली बच्ची डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं होगी कि जब सर्कुलर गया था तो 3 मिनट। ये थी फातिमा हाउस से आयशा नईम। आपका अंदाज़े बयान बेहतरीन था आयशा नईम। अब मैं दावत देता हूँ राबेल अनवर को हैदर हाउस से। राबेल अनवर फ्रॉम हैदर हाउस। The topic of his speech is where the world is coming to. Rabil Anwar from Hyder House. From sunrise to sunset, from dusk till dawn, from 7 a.m. news bulletin till prime time, we all hear is these, that kids being kidnapped, people being looted, banks being robbed, injustice, cruelty, injustice, cruelty, section killings and what not, Mr. President, and what not. And after hearing such spine-chilling news, we often stop, take a moment and think to ourselves where the world is coming to. Mr. President, today I stand here to share my perspective about the world, its people and their actions, the consequences of those actions, and the future of this world. I'm here to talk about where the world is coming to. Ladies and gentlemen, today we all stand at the verge of chaos, our hands shaking, our legs trembling with fear, our visions blurred, our paths diverted, our minds disturbed, and all we can feel is burden on our shoulders. And the only question that is still bothering us is where the world is coming to. Mr. President, the only thing I'm seeing in front of my eyes is the destruction of our society. I can see fire rising high and taking the world under cover. And yes, I raise this question whenever I see beggars on roads longing for a penny. And yes, this question will be raised whenever I see the most indecisive versions of ours, the most shameless versions of ours. Mr. President, my heart wrenches. My heart wrenches when I see terrorism in my country, when I see injustice, when I see terrorism and people dying of hunger, and the political instability that is causing chaos all over the globe. Yes, Mr. President, I feel bad. I feel really bad whenever I see this world going towards the worst. But to whom shall I complain? When you, when me, all the 7 billion peoples in the world, they are all the cause for this trouble, for this chaos. But Mr. President, I'm not against the technology, the development, the struggle this world is doing for its betterment. But why can't we see that with every bigger step we take, we're crushing hundreds and thousands under our feet? Everyone here is working for his own cause. Every single person just thinks about his own future. But what about the world? We all don't even have the foggiest notion that we are moving towards the state of destruction. Mr. President, in the end, I would just like to say that we should work hard and we should stand up, stand united, stand together, strengthen ourselves to work for this world so that we could make this world a better place to live, so that we could make a world
a new world that ensures justice, that ensures that no poverty is left, no terrorism, no child abuse, no harassment, and a world to our upcoming generations that is a better place to live. We must work hard so that we could make a world in which this question, where the world is coming to, won't arise. Thank you. It was indeed an appreciable effort, Rabil Anwar. अब मैं दावत दूंगी इकबाल हाउस से वसी अली को, जिनका मौजूए तकरीर है, नहीं सॉरी, अब मैं दावत दूंगी हैदर हाउस से सरमद फ़हीम को, जिनका मौजूए तकरीर है फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है। सरमद फ़हीम, जिनका ताल्लुक़ हैदर हाउस से है। रोशनी मेरी चाल, वक्त मेरी ढाल, मेरा अज़्म मेरा इस्तक़बाल, मेरा अमल मेरा हाल, मैं कीलो काल से बेनियाज, फितरत का हमराज, सितारा सहरी से हम कलाम, नए अर्श की उम्मीदों का बाम, इरादों की तैग बेनयाम, यही पैगाम सुनाता आया कि फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है। सदरे आली वकार, मेरी तरफ देखिए, रब्बे जुल जलाल ने मुझे तख्लीक़े बाग कमाल बनाया, रसूल अल्लाह ने उम्मती का ताज मेरे सर पर सजाया, सैयदना बिलाल ने मुझे करीना बंदगी सिखाया, इमाम आली मकाम की शहादत ने बातिल को ललकारने का सबक सिखाया, सैयदा ज़ैनब की अदा ने हामिले जुर्रत कलाम बनाया, अबू जंदल का सब्र कहता है तुम रोशनी हो, इब्ने ज़ियाद का सितम कहता है तुम रोशनी हो, तारीक जामों का सरूर कहता है तुम रोशनी हो, ड्रोन हमलों का फतूर कहता है तुम रोशनी हो, सवाली निगाहें कहती हैं तुम रोशनी हो, गुलशन की खस्ता हाली कहती है तुम रोशनी हो, इक़्तिदार की पामाली कहती है तुम रोशनी हो। सदरे आली वकार, मैं ये रोशनी खुद अपने वजूद में और यहाँ मौजूद हर आँख में देख रहा हूँ, जो पुकार पुकार कर कह रही है कि फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है, फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है। सदरे आली वकार, रोशनी मेरा रास्ता और मेरी तमन्ना इसलिए भी है क्योंकि 75 बरस गुज़र जाने के बावजूद मुझे वतने अज़ीज़ की मईशत, तिजारत, ज़राअत, तालीम, हर शय अंधेरों में डूबी नज़र आ रही है। सदरे आली वकार, मैं सुन्नते इब्राहिमी पर चलकर नमरूदी अंधेरों को दूर करना चाहता हूँ। मैं मूसा के असा की रोशनी बनकर रास्ते बनाना चाहता हूँ। मैं खिज़र की रहबरी की किरण बनकर भटके हुओं को रास्ते दिखाना चाहता हूँ। मैं होटलों में काम करने वाले बच्चों के हाथों में कलम थमाना चाहता हूँ। मैं बेरोजगार नौजवानों को कारखानों का चलता पहिया बनाना चाहता हूँ। सदरे आली वकार, मैं अपनी नौजवान क़यादत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है, फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है। सदरे आली वकार, मैं रसूलुल्लाह की अमानत और सदाकत बनकर दुनिया को जगमगाना चाहता हूँ और आज इस ऐवान में ये पैगाम सुना रहा हूँ कि फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है। मैं ये पैगाम सुना चुका कि फिर एक नया आफ्ताब मुंतज़िर तुम्हारा है। आए, मैं आज चनाब कॉलेज के इस ऐवान में ताहद्दे निगाह अवामुन्नास को कहता हूँ, आए अब मैदाने अमल में उतरें, आए बुझे चिरागों को रोशन करें, आए मेरे साथ अंधेरे के पुजारियों को
ललकार कर ये पैगाम सुनाएं कि आखिरी बार अंधेरे के पुजारी सुन लें, मैं सहर हूँ, हकीकत हूँ, उजाला हूँ मैं मोहब्बत का तो देता हूँ मोहब्बत से जवाब, लेकिन दुश्मन के लिए कयामत हूँ मैं। अमन में मौजहे निगहत मेरा किरदार सही, जंग के दौर में गैरत हूँ, रहमत हूँ मैं। मेरा दुश्मन मुझे ललकार के जाएगा कहाँ, खाक का तैश हूँ, अफलाक की दहशत हूँ मैं। खाक का तैश हूँ, अफलाक की दहशत हूँ मैं। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत खूब बोले हैं सरमद फ़हीम। यकीनन आप जैसे ही वतन अज़ीज़ का रोशन मुस्तकबिल हैं। ये थे सरमद फ़हीम जिनका ताल्लुक़ हैदर हाउस से था। Now Muhammad Mahad from Iqbal House will come on the stage. Muhammad Mahad from Iqbal House. The topic of his speech is Heads we win, tails you lose. I walk across the streets of Palestine and I see nothing but the blood of innocent people. Mothers mourning over their children that never returned home. Every knock at the door marks the death of another person in that house. Children sleeping to gunshot lullabies, all when their neighbors are shielded by a mighty iron dome. Power, ladies and gentlemen, this 5-lettered word takes the very right of living away from Palestinians. I look towards Kashmir. The serenity it once carried now feels like calm of death. Every shoulder has carried a loved one to grave. Every heart is embossed with grief. Despite of the 11 resolutions being passed by the UN, India continues to oppress the people of Kashmir, fearlessly chanting to their faces that heads we win, tails you lose. Ladies and gentlemen, heads we win, tails you lose. Let me present to you a land where everything built was disgracefully destroyed by the ones who knew they'll never be built for killing that hard-fought progress. Let me present to you the land between the rivers, Iraq. So let me present to you a country where every nook and corner echoes with a nasty blast, where rotten bones shake by the fluttering of wings, a land where majority of the population is food insecure. They wait for an angel to come and feed them every morning, every evening. The pin drop silence of the international community only adds to the perils of these people. We are deaf to the shrieks in Palestine, inattentive to the blood carpets in Burma. We stand stunned and believe that power gives one right to decide the fate of the weak. Sir, darkness when spreads, it lets no man rise. But men when rise, destiny complies. So with the perseverance of our holy prophet, step forward. With the determination of Jinnah, who despite of great offenses carved Pakistan on the very map of this world, step forward. With the ideology of Tipu Sultan, who preferred living a single day as a lion rather than 1,000 as a jackal, step forward. And with every single drop of blood which painted this land green, step forward. Ladies and gentlemen, once again, let's look towards Kashmir. But this time, let's take example from the courage of the mother of 9 Shaheed sons, Asiya Indrabi, who fearlessly stands in front of her enemy with only one sentence on her tongue. हम लेके रहेंगे आज़ादी, हक हमारा आज़ादी. The same Kashmir gives birth to Burhan Wani, who looks the enemy in his eyes, smiles and says, come, come, come wherever you are. For today I've said my prayers and kissed my mother's forehead. Come what may, I'll not take a step back. Come what may, I fulfill my promise to my people. Sir, let's raise our voices for the oppressed. For we are the reason for Iqbal's dream. For we descend from Ali the Great.
for we descend from Uthman the generous, for we descend from Abu Bakr the Siddiq, for we descend from Hussein, the reason for paradise, for we descend from Muhammad, the reason for everything ever made. Ladies and gentlemen, let's join hands to break the shackles of slavery. Let's understand that the stars are meant to disappear and the day is meant to rise. Let's turn tables, but this time let it be us who say that. Heads we win, tails you lose. Ladies and gentlemen, heads we win, tails you lose. I thank you all. This was Mohammed Mahad from Iqbal House. अब मैं दावत दूंगी इकबाल हाउस से वसी अली को। वसी अली जिनका ताल्लुक़ इकबाल हाउस से है। इनका मौज़ूए तकरीर है, मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। जलाले आतिशो बरके सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। सदर अली वकार 6 जनवरी 2014 की यकबस्ता सुबह हंगू का सरकारी स्कूल, दहशतगर्दी का पहरा, बच्चों के खून के प्यासे भेड़िए, बच्चों के खून से होली खेलने को तैयार, खौफ दहशत और बर्बरियत के हौलनाक साए अपने पर फैलाने को बेकरार। और दूसरी तरफ एक तने तन्हा इंसान, हंगू का 17 साला एक कमसन जवान, जिसने साबित किया खुद को महान। हथियारों की ताकत के सामने वो झुका नहीं, दहशतगर्दी की पेशकदमी देखकर भी वो पहाड़ हिला नहीं। अरे ये सीसा पिलाई हुई वो दीवार है जो दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिला देती है। एतजाज हसन की बहादुरी सैकड़ों बच्चों की जान बचा लेती है। नौजवान की हिम्मत हमें अजदाद की जुर्रत याद दिला देती है और तारीख के औराक पर यह सबक तहरीर करवा देती है कि आओ देखो मैं अकेला हूँ, पर सीने में कोई डर नहीं रखता। मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। सदर अली वकार, जो लोग लश्कर नहीं रखते और फिर भी जीतकर अमर हो जाते हैं, तो ऐसे लोग सिकंदर कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो तख्त पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, जो इंसानियत के लिए जीते हैं और इंसानियत के लिए मरते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं तो कभी गाजी होते हैं। सदर अली वकार, ये वो लोग हैं जिनमें ताहिरा काजी की तरह दहशतगर्दों को ललकारने का हौसला है। अरे गोली उन बच्चों पर क्यों चलाते हो? अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। या उम्मे रुबाब की तरह कि जिसने वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके एक नई मिसाल कायम की। ना ज़ौक़े सोज़ पैदा कर, ना इश्क़े साज़ पैदा कर। जो हिम्मत है तो कुव्वते परवाज़ पैदा कर। नया जज्बा, नई हिम्मत, नया अंदाज पैदा कर। जो ज़माने भर से बेगाना हो वो अंदाज पैदा कर। सदर अली वकार, तारीख शाहिद है कि धरती माँ ने जब भी खिराज मांगा तो इसके सपूतों ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया और अपने लहू से दीप जलाकर जन्नत में चिरागा कर दिया। उन राय हक के शहीदों को वतन की फजाओं का सलाम, जो अपने अपने महाज पर तनहा लड़े तो सिकंदर बने। सदर अली वकार, ये वो लोग हैं जो कभी अपने जिस्म पर बारूद बांधकर दुश्मन के टैंकों के सामने लेट गए। मेजर अजीज भट्टी बने तो दुश्मन को नाकों चने चबा दिए। MM आलम बने तो मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। राशिद मिनहास बने तो तैयारे को जमीन बोस करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। और जब सिपाही मकबूल हुसैन बने तो जिंदान में भी दुश्मन के सामने अपने घुटने नहीं टेके और अपने चिरे हुए नाखूनों और कटी हुई जुबान के लहू से दीवारे जिंदा पे ही लिख दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं रींग रींग के ये शबना गुजारूंगा, मैं रींग रींग के ये शबना गुजारूंगा। सहर मिले ना मिले रात से ना हारूंगा। सदर अली वकार, वो लोग सिकंदर नहीं होते जो सिपाह की तादाद और ताकत पर भरोसा रखते हैं, बल्कि हकीकी सिकंदर तो वो है जो अपनी ताकत परवाज और कुव्वत बाजू पर भरोसा रखता हो। हकीकी सिकंदर तो वो है जिसका मतलूब व मकसूद रज़ाए इलाही हो। हकीकी सिकंदर तो वो है जिसकी समातों में शाह मर्दा और शेर यज़दा के नारों की बाज़गश्त हो। हकीकी सिकंदर तो वो है जो बातिल के सामने डट जाने का हौसला रखता हो। हकीकी सिकंदर तो वो है जिसकी दर्सगाह करबला हो, जहाँ को बातिल बरसरे पेकार हैं। लहू लहू है दश्ते करबला, तन्हा तन्हा है हुसैन। सरे हुसैनी कट तो गया मगर झुका नहीं। कत्ले हुसैन मर गए यजीद बनकर, इस्लाम को हयात बख्श गया। सदर अली वकार, अगर शान सिकंदरी देखनी है तो किरदार ज़ैनब में देखिए, जो दरबार यजीदी के दरो बाम को भी लर्जा देता है।
सदर आली वकार, आज के मौजूए सुखन के हवाले से अपने वतन के नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो भी इसी जज्बे की लौ से अपने किरदारों को जगमगाएं जिस तरह उनके असलाफ ने अजमतें और फतेह हासिल की। चाहे हम अकेले हों, चाहे तादाद में कितने ही कम हों, मगर मकसद अजीम के हसूल के लिए हर मुश्किल के सामने डट जाना ही शान सिकंदरी है। क्योंकि सिकंदर वो नहीं होता जो लश्कर रखता है, सिकंदर तो वो होता है जो सीने में डर नहीं रखता। मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तारीख करबलाए सुखन देखना कि मैं, तारीख करबलाए सुखन देखना कि मैं खूने जिगर से लिख के वरक छोड़ जाऊंगा। आपकी समाजों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत खूब वसी अली। Now Abdul Basit from Jinnah House will come on the stage to deliver his speech. Abdul Basit from Jinnah House. The topic of his speech is we all want white collar job. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, today I am here to share my views about we all want white collar job. White collar job simply refers to the kinds of jobs that are being used in performance and manual performance. They include clerical jobs, managerial and secretarial related jobs. In simple terms, these are jobs which do not require manual labor, clerical jobs, and have been used as the best definition and perfect example of white collar job. Mr. President, as we all know, the important thing in white collar job do differ with the specific type of job and are even changing with the advent of technological developments. For instance, due to use of computer in technological skills, computer use is very essential for white collar job sector. However, the depth of such skills may differ depending on the job. Basic use of internet is very essential in today's white collar job. Mr. President, all white collar jobs require certain levels of jobs and perform certain levels of job. Education level is the most considered factor by employers that being given to the with higher education levels. Mr. President, we are white collar jobs become to seeker through many ways. Many of the white collar workers that are performed specific performance in their specific performance and experience and expensive on the same. In the nutshell, I would conclude my topic, all factors and aspects associated with white collar jobs should be considered not only by employers but also by job seekers based on the performance capabilities. I thank you to all. अब मैं दावत दूंगी जिना हाउस से अली हसन को। अली हसन जिनका ताल्लुक जिना हाउस से है। अली हसन का मौजूए तकरीर है, मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। सदरे जी वकार, काबिले सद एहतराम जजिस साहबान और हजराते ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। इंटर हाउसेस के तकरीरी मुकाबला 2022 के मौका पर जिस मौजू पर मुझे अपने ख़यालात को अल्फाज की ज़बान से अदा करना है, वो एक जज्बा है जिसकी अज़मत के आगे सारी रिफ़तें झुक जाती हैं। एक जज्बा है जिसके सामने वक्त के दायरे सरनिगू हो जाते हैं। एक जज्बा है जिस पर तारीख़ आलमे नाज़ाओं फरहां है। मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं वो सिकंदर हूँ जुल्मते शब हालात में नवीदो सहर,
मैं वो सिकंदर हूँ मार्काए बेमो रिजामे तेगो सपर। मैं वो सिकंदर हूँ कारजारे दहर में फिजाए बदर। जनाबे वाला, मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। अरबाबे इल्मो दानिश चश्मे फलक ने ये नज़ारा अपनी आँखों से बार बार देखा। मलाइका दंग थे, हुरो गिल्मा अंगुश्तो बदन दां थे। जनाबे वाला, चश्मे जहाँ चश्मे दीद गवाह है, तरीक़े इंसानी रकम तराज है। आज भी जहाँ आबोगिल के गोशे गोशे से जानिसाराना इस्लाम की सदा सुनाई दे रही है। आज भी दुश्मनाने इस्लाम की रूह गाजियाने इस्लाम के कदमों की आहट से लर्ज़ां है। आज भी मुसलमान, जनाबे वाला, मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। 19 मई 1965 की एक शुद्ध चमजाबाज सिपाहियों ने पाक वतन की तरफ बढ़ते कदम रोककर हिंदू बनिए के ख्वाब चकना चूर कर दिए। जनाबे वाला, जब महमूद गजनवी के घोड़ों की टापों से सुनात पर सुनामी की फलक शगाफ मौजों को उठते सब ने देखा। जब बंगाल को वीरां, दिल्ली को बेचराग, दक्कन को उजड़ते और शहर महसूर की तलवार को टूटते सब ने देखा। जनाबे वाला, मैं वो सिकंदर हूँ आग रोशन करते किसने नहीं देखा। फातिहा अंदलस में दरियाए बर्बाद के साहिल पर तारिक बिन जियाद को कश्तियाँ जलाते किसने नहीं देखा। मैं, मेरे मुंह को लगाम दो, हम 1 लाख थे, हमने झुका दिया सर को। हुसैन तेरे 72 सरों को लाखों सलाम। हुसैन तेरे 72 सरों को लाखों सलाम। मैं वो सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। इब्ने अली हजरत इमाम हुसैन को बातिल से लड़ते किसने नहीं देखा। मौला अली शेर खुदा को खैबर का किला ज़मींबोस करते किसने नहीं देखा। हजरत साद बिन नबी वकास के हाथों रुस्तम का गरूर खाक में मिलते किसने नहीं देखा। हजरत खालिद बिन वलीद के 40,000 फौज के आगे रोमियों के लाखों के लश्कर झुकते किसने नहीं देखा। जनाबे वाला, बदर का वो वलवला खेज तारीखी वाक़या किससे पोशीदा है, जब 313 सहाबा की मुख्तसर जमात ने कुफारो मुशरिकीन को तयो तेक कर डाला कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है बजिद, मैं भी सिना की नोक पर सर छोड़ जाऊंगा। मैं अपने डूबने की अलामत के तौर पर दरिया में एक आध बंवर छोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। आपकी समातों का शुक्रिया। Now it's the turn of Asif Murad from Liaquat House. Asif Murad from Liaquat House. The topic of his speech is Necessity Knows No Law. Mr. President, the chronicles of world history give millions of solid evidences that man is born free, but is constantly redeemed in a chasm of chains, but he finds himself in chains and restraints. These chains and these restraints remain the same, but their size, their structure, their signs, their symptoms, their bulk, their scale mounts on constant change. Mr. President, man is born free, but is constantly redeemed in a chasm of chains. The chains of towering tradition, the chains of consistent custom, the chains of anomalous convention of exotic ritual, and the laws of imperial imposing of atrocious margin, so on and so forth. Mr. President, man is born free. They all say that man is unique, that man is exceptional, that man is a master of his own fate. Indeed, all these slogans are nice, bright, and embellished with an apex of bravery. However, no one can deny the fact that since time immemorial, that man is stuck in chains. These chains and these handcuffs cannot be removed,
consistent resistance. It needs man to be rational. It needs man to be wise. It needs man to be hopeful, to be forceful, to be prompt, to be proactive, to be desirous of his goals. It needs man to be wise. Mr. President, the working class, the poor community is extremely vital for human development and existence. But the tragedy of their fate is that this class is in the constant incarceration, is that this class is in the vicious grasp of poverty. They provide luxuries for others, yet themselves remain deprived of even small bits of their life. They keep on working till their death, and then the calamity of their doom is passed on their innocent children. They have nothing but tears. They have nothing but mortification. They have nothing but dignity, disgrace, and dishonor. Because, Mr. President, they have nothing to lose but these laws of the world. They are human. They are moral. They are living beings, so they have dreams, and surely they wish for those dreams to come true. They have hallucination for decent living. They want to get rid of institutional racialism. And when these chains of socio-political intrigue, and when these laws of socio-economics would be broken down, they would come out of ebb of unwanted modification. Just for this, Mr. President, they are ready to give you anything. They are ready to give you their respect, their prestige, their cash, their honor, their standing, their dignity, and their respect. They are ready to give you anything. Mr. President, sadly enough, we cannot neglect their social needs and their requirements. And in this paradigm, Mr. President, if I ask you the question, can we forget the pains and the burdens they carry? Your answer, no, Mr. President, no. Can we forget their social needs and their requirements? Your answer, no, Mr. President, no. We cannot neglect their social needs and their requirements, because without them, our country would fall into oblivion. Even though we know that they still are slaves, bounded to the chains of slavery and the chains of poverty. Mr. President, I see a man with 6 children who killed his wife and his daughters just to end up the poverty. I thank you all. Honorable Principal Sir Syed Mehdi Shah and HMT2 Ms. Fawzia Iftikhar and HMT1 Sir Liaquat is with us. Please give them a big round of applause. अब मैं दावत दूंगी लियाकत हाउस से हसन अकबर को। हसन अकबर जिनका ताल्लुक लियाकत हाउस से है, उनका मौजूए तकरीर है जिंदा हैं अब तक ढीठ जो हैं। हसन अकबर जिनका ताल्लुक लियाकत हाउस से है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जनाबे वाला अम्मी जान कहा करती थी, कभी कोई जिन देखो तो बोलो तौबा, लेकिन मैं कहा करता था अम्मी जान या जिनविन कुछ नहीं होते। लेकिन आज मुझे यकीन आ गया है, तौबा। जनाबे वाला, इससे पहले मैं अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज़ करता चलूँ, मैं चनाब कॉलेज झंग की चंद अजीम शख्सियात को अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ। मेरा आज का पहला सलाम चनाब कॉलेज झंग की हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब मोहतरम सैयद मौलाना सर लियाकत साहब के नाम। सर, आई लव यू टू सर। मेरा आज का दूसरा सलाम इन मम्मी डैडी प्रोक्टर्स के नाम, जो ये कहते फिरते हैं ए सारी ताकत घ्यो दी वाह, ए सारी ताकत घ्यो दी वाह, ए कॉलेज मेरे प्यो दा वाह। जनाबे वाला, मेरा आज का तीसरा सलाम इन लड़कियों के नाम, जो नीले शलवार कमीज के ऊपर रत्ते रंग की सुर्खी लगा के आ जाती हैं, माँ कसम पूरी एम्बुलेंस लगती हैं। जनाबे वाला, खैर सिनफ़े जनाबे वाला, उर्दू ग्रामर के रूल से लड़कों की 3 अक़साम होती हैं। पहले आते हैं ढीठ लड़के, उसके बाद आते हैं बहुत ढीठ लड़के, और उसके बाद आते हैं T1 के लड़के।
जनाबे वाला ये ढीठ ना तो सर सज्जाद पटवाल का हेयर स्टाइल देखकर हुए हैं और ना ही शकील साहब की खूबसूरती से जल कर, और ना ही सर जुल्फ़कार भैंस की लाठियाँ और भैंसे गिन गिन कर, और ना ही परिजात ड्रामा देखकर। Hassan Akbar, you are doing paper reading. You are disqualified. Please leave the stage. Now it's the turn of Ariba Mahrosh from Maryam House. Ariba Mahrosh from Maryam House. Ariba Mahrosh from Maryam House. The topic of our speech is necessity knows no law. With fingers weary and worn, with eyelids heavy and red, a child sat in untidy rage, playing his fingers with thread, shedding tears and anomalous desires spread, for he is just asking for a loaf of bread, worthy President. Necessity knows no law. In the system in which the humanity is desiring anxiously for a loaf of bread, whereas the weevil pets of the rich are having foreign foods, necessity knows no law. In the system in which the fate sleeps in cottages, whereas the luxuries dance in palaces. And Mr. President, necessity knows no law. In the system in which the chastity of women is swindling, whereas the opulent are weighed in silk. And necessity knows no law in this system in which if the cart of the poor hits the car of the rich, he goes to jail, whereas if the rich damnifies the man under his car, the DSP himself comes to his palace for condolence. Mr. President, necessity knows no law in the system in which if an indigent boy gets distinction, he becomes a clerk, whereas if the rich appears in the exam on the behalf of the arms, he goes to the best medical college of the whole country. Mr. President, because in human life, everyone breaks the rules. Because all humans are wise, not fooled. Society, law, and rule are a wave of time. Breaking rule in necessity is no crime, Mr. President. Hook or by crook, without paying attention to the rules, necessity may even force a man to indulge in criminal deeds, not deliberately, but to overcome a situation. That is why it is said that necessity knows no law. A hungry man may even go to the extent of killing another person to steal the food from him. His intense desire of existence forces him to get the food by fair or foul means. Because, Mr. President, a needy person does not think of the rules and laws, Mr. President. Necessity knows no law. Unfettered, it crosses each stream, eats each meal as if it were the last. Because, Mr. President, just think of that moment when the son of the poor women, the only associator for old age, is lying mortinous outside the hospital for the want of medicine. Mr. President, think of that moment when the poor is compelled to bury his son without obsequies. And think of that moment when the destitute is forced to dance his daughter in front of the elites for the want of money. And think of that moment when the falcons of Iqbal are compelled to find shelter in drugs, Mr. President. Just imagine that moment when the innocent children are forced to find a loaf of bread in heaps of dung. Can, worthy President, their necessities know law? No, President, no. At last, I want to say that a fact is
fact, and nobody can deny the fact that necessity knows no law. In frustration, in searching frustration, our error lies. We all quit our spheres and rush into the skies. Insurgence is still aiming at the blessed abodes. Men would be angels, and angels would be gods. Thank you. Well done, Ariba Marosh. Your unique style is impressive. अब मैं दावत दूंगी मरियम हाउस से आइमा खान को। आइमा खान जिनका ताल्लुक मरियम हाउस से है। आइमा का मौजूए तकरीर है गर्दाब की हर तह में साहिल नज़र आता है। ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले सदर आली वकार, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक जुगनू के जागने से ये तीरगी की दबेज चादर नहीं कटेगी। मैं जानती हूँ कि मेरा शोला चमक के रिज़्क़े गुबार होगा। मैं रोशनी की लकीर बनकर किसी सितारे की मिसल बिखरूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी कम ताब रोशनी से सहर न होगी, मगर मैं फिर भी स्याह शब का गुबार बनकर नहीं जीऊंगी सदर आली वकार, क्योंकि मुझे गर्दाब की हर तह में साहिल नजर आता है। आली वकार, मेरे हौसलों की तारीख पुरानी है, अज़्म व हिम्मत मेरे असलाफ की निशानी है। हालात जैसे भी रहे मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। 1026 में मेरे अज़ाइम का इम्तिहान हुआ, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हुआ और 16 दफ़ा हार के बाद 17वें हमले में सोमनाथ पर अपने अज़्म व यकीन का परचम लहरा दिया। 1187 में मेरे अज़ाइम का फिर इम्तिहान हुआ, लेकिन मैं नहीं घबराया और सलाहुद्दीन अयूबी बनकर डटा रहा और बैतुल मक़दस पर अपनी कामयाबी का झंडा लहरा दिया। मुझे जब भी आजमाया गया सदर आली वकार, मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। जब 1965 में मुझ पर शब खून मारा गया, जब 1971 में मेरे ढाके को ढाया गया, तो मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। जब अंग्रेज फरंगियों ने मुझ पर राज किया, जब हिंदू बनिए ने मेरा सब कुछ ताराज किया, तो मैं नाउम्मीद नहीं हुआ और इस नाराए मस्ताना से तागूत के ऐवानों को हिलाता रहा कि गर्दाब की हर तह में साहिल नजर आता है। बला से शब है अंधेरों के नाग पाले हुए, मेरा चराग उजालों को है संभाले हुए। कोई भी मौजे बलाखेज क्या डबोएगी, हमारा अज़्म जवां है हमें उछाले हुए। निकल गए हैं वही तीरगी के जंगल से, जो अपनी ज़ीस्त को है रोशनी में ढाले हुए, जो अपनी ज़ीस्त को है रोशनी में ढाले हुए। आली वकार, मेरे हौसलों की तारीख पुरानी है। आली वकार, मेरा मुल्क दहशतगर्दी, महंगाई, सियासी हब्स और तबकाती तज़ाद की दलदल में फंसा हुआ है। मैं मुश्किल और नामसाद हालात में भी डट के खड़ा हूँ। मैं उम्मीद का दिया थामे नाउमीदी से कोसों दूर हूँ। मैं कभी ज़र्बे अज़ब बनकर गर्दाब से निकलता हूँ, तो कभी रद्दुल फसाद बनकर दुश्मन पर कहर ढाता हूँ। मैं कभी अरशद नदीम बनकर अपनी ताकत का लोहा मनवाता हूँ, तो कभी नूह बट बनकर अपनी कुव्वत और हैबत की धाक बिठाता हूँ। मैं कभी अंसार बंडी बनकर लोगों के काम आता हूँ, तो कभी डॉक्टर अमजद साकिब के रूप में अखुवत और यगानगत का हाथ बन जाता हूँ। आली वकार, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरे अंदर वो जज्बा-ए ईमानी है जो पहाड़ों और दरियाओं, मैदानों और चट्टानों को पसे पुश डाल देता है। मैं इश्क़े मुस्तफ़ा से सरशार और हमदम मुश्किलात के लिए तैयार हूँ।
मैं खालिदो हैदर की यलगार का निशान हूँ, मैं महमूदो कासिम की तलवार की पहचान हूँ, मैं सलाहुद्दीन अयूबी की जुर्रतों का निशान हूँ, मैं मेजर अजीज भट्टी की उलुल अज़्मी का इशारा हूँ, क्योंकि मैं रिजायत उम्मीद का पैगाम हूँ कि जब जज्बा इब्राहिमी है जिंदा तो शौलों से क्या डरना, अगर रास्ता है यूसुफ का तो जेलों से क्या डरना, अगर वारिस हो मरियम के तो इल्जामों से क्या डरना, अगरचे आज भी चारों तरफ तारीक रातें हैं, अगरचे आज भी शैतान की वो पहली सी घातें हैं, मगर हमें इस हौसले और यकीन को ऊंचा ही रखना है कि जिससे रोशनी होगी, कि जिससे वो सहर होगी, कि जिससे बेनवाओं की नवा भी मोतबर होगी, सकून से बेकसों की जिंदगी जिसमें बसर होगी, सकून से बेकसों की जिंदगी जिसमें बसर होगी। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। ये थी मरियम हाउस से आयमा खान। The next participant of English speech competition is Danish Imran from Nishtar House. Danish Imran from Nishtar House. The topic of his speech is where the world is coming to. This is the best world that we live in. To lend and to spend and to give in, but to borrow or beg or to get a man's own. It is the worst world that ever was known. Mr. President, it goes without saying that Allah Almighty created man in His own image and made him the crown of creations. But I'm sorry to say that man has got himself dissociated from the right path and engrossed himself in the wrong ways of the world by following evil satanic ways and has plunged the whole world into the worst type of dangers. Sir, it cannot be gainsaid that despite tremendous progress in different fields of life, modern man is converting the whole world into a dungeon. In this world, we see that the weak and the poor are pushed to the wall and they are thrown in the ditch of tortures and pains, while the strong and the rich are welcomed and shown the way of glory and pleasures. Mr. President, through liberty and freedom is a birthright of man, yet some cruel people snatch this right from those who are weak. The tyrants take all kind of benefits out of them, and the poor and oppressed people are left without the bare necessities of life. Their voice is suppressed, their right of expression is snatched, and they are treated just like slaves. Mr. President, the modern man has converted himself into a robot, and a sinister race for amassing more and more wealth is going on. Life is becoming complicated day by day. I do not know where the world is coming to. Mr. President, life itself is an acute problem. Out of it arises an unending series of questions. These are elements of selfishness, vanity, hypocrisy, and discontentment in his nature. These germs, when increased, become a nuisance for society. Making a hell upon earth, man begins to suck the blood of his brethren and snatches their hard-earned bread and spreads confusion, destruction, and harassment among the weak. William Wordsworth was deeply moved when he said, "And much it grieved my heart to think what man had made of man." Mr. President, when the desires of poor children remain unfulfilled, when the smiles from their faces fade away, when the family next door sleeps empty stomach, when the whole society is filled with depression, frustration, and aggression, when income inequality has grown to astronomical level, when a poor man does not even have money for his deteriorating health, when justice is not served, rather bought, then I can say that the coming time is the time of big trial. The coming time is the hard time. The coming time is the tough time to face problematic situation and crisis. Mr. President, look around yourself. Are the sobs, cries, and moaning of the ailing children is still inaudible? Don't you see the old bedridden, tumbling people awaiting food and medicine? For God's sake, take care of this world where you and I
Our kith and kins and our fellow beings are panting and thirsting for bread, shelter, and justice. Why are we being deprived of the basic amenities of life? These are very words uttered by a young man with empty stomach running from pillar to post. But the question is, who is responsible for this state of affairs? Me or you? No, we both are victims sailing in the same boat. Sir, half the world does not know how the half lives. Nobody has ever bothered about the humans dying of thirst, disease, and hunger on earth. Sir, it is very sorry state of affairs that might is right has become the slogan of the day. In such a miserable and pathetic situation, we can observe that where the world is coming to. I thank you all.